Good evening, dear students. Welcome to Matrix DigiLearn, and today we'll discuss about the computer awareness. And the questions are on your screen. The first question for you: if there are multiple recycle bin for a hard disk, then what happens? जदि आमर मल्टीपल रिसाइकल बिन थाए गोटे हार्ड डिस्क रे ताले इटा या भितर को स्टेटमेंट टा ट्रू हबो यू कैन सेट द डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकल बिन यू कैन चूज which recycle bin to use to store your deleted files. You can make any one of them default recycle bin, none of the above. जदि तमरो गोटे हार्ड डिस्क रे एक रु अधिक रिसाइकल बिन रो यूज करा जिवो ताहले एमानक भितरु को स्टेटमेंट ता होजी ट्रू यू कैन गिव योर रिस्पांस बाय सिंपली चैट तमे तम रिस्पांस देई परिबो चैट माध्यम रे which statements is true about the recycle bin if there is multiple recycle bins. You have give response as C. I think C is not right answer. A, you can set different sizes. आमर प्रति हार्ड डिस्क रो पार्टीशन पाई तमे हार्ड डिस्क रो साइज अनुसार देखि डिफरेंट साइज गुडा को मेंशन कर देई परिबो तो ए रिसाइकल बिन रो एति ऑक्युपाई करबो डिस्क पार्टीशन रो ए रिसाइकल बिन डिस्क पार्टीशन रो एति स्पेस ऑक्युपाई करबो तो तमे सेटा देई परिबो तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट एमानक भितरु को स्टेटमेंट ता ट्रू नुह ऑप्शन थिला you can find deleted files in a recycle bin you can store any files in a recycle bin if you have ever need you can increase free space on the disk by sending files in a recycle bin you can right click and choose empty recycle bin to clean it at once एमानक भितरु कोटा होची फॉल्स स्टेटमेंट बा को स्टेटमेंट ता ठीक नुह तमे डिलीटेड फाइल गुडा को रिसाइकल बिन रे पाओ तमे रिसाइकल बिन रे थिबा जिंस गुडा को जहा डिलीट करा जाय थाए आवश्यक मुताबिक पूरी ता पुराना जगह को रिस्टोर करि परिबो यू कैन इंक्रीज तमे डिस्क स्पेस बढ़े देई परिबो रिसाइकल बिन रो केते डाटा स्टोर करिवो and you can right click to choose empty recycle bin to clean at once एमानक भितर को स्टेटमेंट ता फॉल्स ट्रू नुहे option C is your right answer yes option C is your right answer you can increase free space on the disk by sending files in recycle bin तमे डिस्क स्पेस को बढ़े देई परिबो रिसाइकल बिन को फाइल को डिलीट कर देले नुह काहे कि ना रिसाइकल बिन रो जो पार्टीशन हेई थाए बा रिसाइकल बिन पाई जो स्पेस बाहरी थाए सेटा होची से डिस्क स्पेस रो स्पेस दे रे इंक्लूड थाए तो जे पर्यंत रिसाइकल बिन रो तमे एम्प्टी करी ना हो से पर्यंत सेटा डिस्क ड्राइव रो सेति स्पेस को ही ऑक्युपाई करी रखे सो ऑप्शन सी इज योर फॉल्स और रॉन्ग स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट आर रॉन्ग you can reset it using जदि तम सिस्टम रे देखा जाउथिबा डेट आउ टाइम ता भूल थाए ताहले तमे एमानक भितर को जिंसटा को यूज करिवो राइट कैलेंडर राइट फाइल कंट्रोल पैनल if displayed system time and date are wrong you can reset it using जदि डेट टाइम तमरो भूल थाए एमानक भितर को ऑप्शन को व्यवहार करी
तमे डेट टाइम को रीसेट करि परिबो ठीक करि परिबो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी you have give response as option A you have give response as option D is whoever give response as option D जे ऑप्शन डी कहिले तांकर आंसर टा ही ठीक अछि तो कंट्रोल पैनल रे ही आमे जाई डेट एंड टाइम को चेंज करि परिबा जोटा ओल्ड वर्जन रे कंट्रोल पैनल रे होतिला माने विंडोज 7 पर्यंत जोटा कंट्रोल पैनल रे करा जाउतिला विंडोज 8 ऑनवर्ड्स सेटिंग रे सेही ऑप्शन गुडा को जाई आमे डेट टाइम को रीसेट करि परिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू you should save your computer from option अछि viruses time bombs worms all of the above you should save your computer from viruses time bombs worms and all of the above तमे तम कंप्यूटर को सेव करिवा दरकार प्रोटेक्ट करिवा दरकार कहा थरो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव ए समस्त ऑप्शन को हमें यूज करिवा को पड़िबो काहे कि ना कंप्यूटर को बा सिस्टम को जदी हमको प्रोटेक्शन करिवार अछि भाइरसेस तो मुख्यतः प्रोब्लेम करे भाइरसेस माने कोन प्रथम कथा जानिबा दरकार भाइरस माने होची वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीच तो काहे कि ताको को होचंदी वाइटल माने बुझी परथुबो गुरुत्वपूर्ण रिसोर्स माने होची संबल इंफॉर्मेशन माने सूचना अंडर सीच माने रद्द करिबा जे गुरुत्वपूर्ण सूचना संबल को रद्द करे तो भाइरस सीटा तो ऑब्वियसली भाइरस यदि कंप्यूटर को आसुची कंप्यूटर डाटा फाइल्स गुडाक बा कंप्यूटर ओएस बा ऑपरेटिंग सिस्टम उपरे इंपैक्ट पडिबार बा प्रभाव पडिबार बहुत सारा संभावना अछि देन आसिला हमर वर्म भी होची गोटे प्रकार वायरस जहां भी हो हमर सबु थ्रू कंप्यूटर को प्रोटेक्शन करिबा दरकार सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वर्ल्ड वाइड वेब इज बीइंग ए स्टैंडर्ड बाय World Wide Web is being a standard by options are Worldwide Corporation, W3C, Worldwide Constitution, and Worldwide Web Standard. Anyone can give the response? Question number 5. Worldwide Web, WWW, is being a standard by. You have give response as option D. I think this is not right answer. This is this answer option B. W3C माने World Wide Web Corporation. Okay, next question for you. A co-processor कौन टा? A relatively easy to support in software. Option B causes all processor to function equally. Option C works with any application. Option D is quite common in modern computer. A co-processor पाई या भितर को स्टेटमेंट ट्रू is relatively easy to support in software. सॉफ्टवेयर गुडा को सपोर्टिंग करिबा पाई एटा होची बहुत भलो बा इजी सहज causes all processor to function equally. समस्त प्रोसेसर गुडा को इक्वाली काम करिया पई अलाउ करे वर्क्स विथ एनी एप्लीकेशन जे कोनोसी एप्लीकेशन रे काम करे इज क्वाइट कॉमन इन मॉडर्न कंप्यूटर एनीवन कैन गिव द रिस्पांस एस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर is relatively easy to support in software this answer is the right answer next question for you a Microsoft window is dash Microsoft Windows टा होची कोनटा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसिंग डेटाबेस प्रोग्राम एनीवन कैन गिव द रिस्पांस a Microsoft Windows is dash yes the right answer is your operating system by OS
आमर कंप्यूटर को चलीबा पई जो कहूचे ओएस बा ऑपरेटिंग सिस्टम रा आवश्यक अछि तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होची गोटे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, which of the following is a program group? Which of the following is a program group? आज जो क्वेश्चन मु नहीं छी ए क्वेश्चन गुडा को बहुत इजी लागले भी इजी नुहे बुझिबा पई बहुत सारा टेक्निक अछि. And which of the following is a program group? एमान को भितर कोटा गोटे प्रोग्राम ग्रुप? Accessories, paint, word, all of the above. Anyone can give the response? No. Option D is the wrong answer. The right answer is accessories. Accessories जो होची तमरो ढेर सारा प्रोग्राम रो ग्रुप तमे accessories को गले. No, option D is wrong answer. Option C is also wrong answer. The right answer is option A, accessories. Accessories को गले तमे Wattpad, Notepad, then होची तमरो जोटा को जो पेंट एभली प्रोग्राम पाइबा सहित आधेर मध्य आहुरी सारा जिंस गुडा पाउछ जेमति कि सिस्टम टूल्स भीतर तमे जो कोच डिस्क क्लीन अप, डिस्क डिफ्रैग्मेंटर एभली ऑप्शन गुडा अछि. देन तमरा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन अछि. एक्सेसिबिलिटी जोटी कोच ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, मैग्निफायर एभली जिंस गुडा अछि. तो द राइट आंसर इज accessories. Next question for you, which is not application software? एमानको भितर कोटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नुहे? ऑप्शन ए विंडोज एनटी, पेजमेकर, विनबर्ड, फोटोशॉप. which is not application software? एमानको भितर कोटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नुहे? The right answer is option A, विंडोज एनटी. गोटे विंडोज रो वर्जन एटा तो विंडोज एनटी एटा गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नुहे. आउ बाकी पेज मेकर को विनवर्ड भी को फोटोशॉप भी को एगुडा को सब गोटे गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. केवल विंडोज एनटीटा होचे गोटे ओएस बा ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द प्रोग्राम compress large files into smaller file. The program compresses large files into smaller file. जो प्रोग्राम बड़ा बड़ा फाइल को कंप्रेसिंग करी छोटा कर दिए ताको कौन कहंती? ऑप्शन ए WinZip, option B WinShrink, option C WinStyle, and option D none of the above. The program that compresses large files into smaller file. Yes, the right answer is your WinZip. Option A is the right answer. एगुडा को सेमती किछि नाही. WinShrink, WinStyle एगुडा को सेमती किछि नाही, केवल कंफ्यूज करिवा पई ऑप्शन गुडा दिया जायछि. WinZip द्वारा फाइल को कंप्रेसिंग करी हुए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? एमानको भितरु कोठा होछि गोटे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रो एग्जांपल? ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ऑप्शन सी विंडोज एक्सपी, and option D process control. Which option is the right answer? Which of the following is an example of a real time operating system? You have give response as option C, Windows XP. Yes, this one is the right answer, Windows XP. Okay, next question for you. Which of the following operating system does not implement the multitasking truly? एमानको भितरु को ओएस टा मल्टीटास्क बा एक रो अधिक काम गोटे समय रे करिबा पई अलाउ करे नाही? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन विंडोज 98, विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट डॉस. Yes, you have give response as option D, and this one is the right answer. MS DOS is that type of operating system which cannot support multitasking. गोटे समय रे एक रो अधिक काम डॉस रे ही करा जाय परिबो नै. That is a single user, single tasking, and character user interface or CUI operating system. Next question for you. Which of the following Windows version support 64-bit processor? एमानको भितरु को विंडोज रो वर्जन 64-bit प्रोसेसर को सपोर्ट करे? विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज 95.
Which option is the right answer? Which of the Windows version support 64-bit processor? 64-bit processor को किए supporting करे? The right answer is Windows XP. Windows XP रे 64-bit processor ही support दिए. Okay, next question for you. Which of the following operating system does not implement multitasking truly? Already completed. Next question for you. What program runs after a computer is booted and loading GUI? एमानक भितरु को प्रोग्राम टा फास्ट चले जेतबेले कंप्यूटर बूटिंग हुए बा स्टार्टिंग हुए एंड GUI बा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टा हमरो चले तो एमानक भितरु कोटा इंप्लीमेंट हुए ऑप्शन ए डेस्कटॉप मैनेजर ऑप्शन बी फाइल मैनेजर ऑप्शन सी विंडोज एक्सप्लोरर एंड ऑथेंटिकेशन ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी एमानक भितरु कोटा प्रथम इंप्लीमेंट हुए you have give response as C. No, that is wrong answer. You have give response as D. S. A hobo B hobo C hobo D hobo not confused. तो जदि आमे जेतबेले प्रोग्राम फास्ट स्टार्टिंग हुए कंप्यूटर बूटिंग हुए देखे से जे ऑथेंटिकेशन ता ठीक अछि ना नाही जो ऑथर ताकू यूजर करूची बा यूजर यूजिंग करूची से सब ठीक ठाक रहउची ना नाही ऑथेंटिकेशन होची राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Which of the following operating system do you choose to implement a client server network? एमानक भितरु को ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करा जाए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क तैयारी करिया पे क्लाइंट जो आमे माने रिक्वेस्ट पहुंचौचे सर्वर पाखु जे सर्वर हमकु किछि इंफॉर्मेशन शेयरिंग करू एंड सर्वर ता क्लाइंट मानन को मध्य वेब ब्राउजर जाइथिबा रिक्वेस्ट अनुसार इंफॉर्मेशन शेयरिंग करूची ताले मु कहिबा कथा एमानक भितरु को ऑपरेटिंग सिस्टम से कामटा करिबा पे हेल्प करे. My option A MS-DOS, option B Windows, option C Windows 98 and option D Windows 2000. कोटा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रथमे एटा इंप्लीमेंट कला? Yes, the right answer is option D Windows 2000. Okay, next question for you. Which of the following operating system is better for the implementing a client server network? Already completed. My computer was introduced from. My computer was introduced from. हमें जो Windows रे कहूचो my computer बा my computer गोटे थाए जोटी कि हमें सो फाइल गुडा को सॉरी डिस्क ड्राइव गुडा का एक्सप्लोर करू ताले सेटा केबे इंट्रोड्यूस हला Windows 3.1 Windows 3.11 Windows 95 and Windows 98 एई जो जिंसटी हमें देखिबे को पाऊ एटा केबे इंट्रोड्यूस हला. You have give response as option A. That is the wrong answer. The right answer is option C. Windows 95 जेतबा आसिला सेतबले भी हमर Windows ए जो जिंसटी इंप्लीमेंट करा गला. This one has implemented in this period. Okay, next question for you. Next question for you. Which of the following Windows do not have start button? एमानक भितरु को Windows version रे start button नहीं. Option A Windows Vista, option B Windows 7, option C Windows 8 and none of these. Anyone can give the response? एमानक भितरु को version रे Windows रो start button नहीं. You have give the response as option D. No, actually 7 पर्यंत start button थिला but Windows 8 बा Microsoft Windows जेतबे 8 इंट्रोड्यूस हला 7 थारु सेतरे start button नाही. Windows 7 रे start button थिला start बोली पूरा आसे but एटा अलगा प्रकार इंटरफेस को चूज कला. Next question for you. Which is the latest version of Microsoft Windows? जेतबेले क्वेश्चन ता तयारी करा जाउतला लेटेस्ट वर्जन थिला विंडोज हां अच्छा ठीक अछि क्वेश्चन अनुसार एमानक भितरु कोटा होचे विंडोज रो लेटेस्ट वर्जन
Windows 2007, Windows 8.1, Windows 2008, Windows 7. No, option B is the right answer. Windows 8.1. Windows 8.1 a list भितर थिबा जिंस गुडाक भितर होचे लेटेस्ट वर्जन. Next question for you. Which operating system doesn't support networking between computers? Which operating system doesn't support networking between computers? एमानक भितर को ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग करिवा पई परमिट दिए नाही. ऑप्शन ए Windows 3.1, Windows 95, Windows 2000 and Windows NT. Anyone? You have give response as Windows NT. No, Windows NT is very advanced operating system. तो सेते को ऑलरेडी नेटवर्किंग सिस्टम रो डेवलपमेंट हे जाइतला. तो जेते Windows 3.1 थिला that is not a colorful screen. सेते colorful screen नथिला. तो colorful screen नथिला and networking कथा भी सेते एते डेवलपमेंट हे नथिला. बट धीरे धीरे 2000 बेले को सेडा सब हे जाइतला. Which operating system gala ita? Next question for you. Which of the following doesn't support more than one program at a time? एमानक भितर कोटा गोटे समय रे एक रु अधिक प्रोग्राम चलिया पई सपोर्ट दिए नाही. ऑप्शन ए DOS, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी विंडोज एंड ऑप्शन डी यूनिक्स. एमानक भितर कोटा गोटे समय रे more than one program चलिबा पई सपोर्ट दिए नाही. Anyone? Yes, DOS is the right answer. DOS टा होची गोटे सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग and character user interface operating system. So you cannot run more than one program at a time. गोटे समय रे केवल गोटे टास्क तमे कैरी आउट करि परिबो. Which of the following is not an OS? एमानक भितर कोटा गोटे OS नुह. ऑप्शन ए DOS, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी विंडोज एंड ऑप्शन डी ओराकल. एमानक भितर कोटा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम बा OS नुह. Anyone? Option D is the right answer. Oracle टा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम नुह. बाकी DOS टा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स भी गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम and Windows मध्यम गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम. So right answer is option D, Oracle. Oracle टा गोटे OS गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम नुह. Next question for you. Linux is an dash operating system. समस्त हमें जानी गले पूर्व क्वेश्चन रे जे लिनक्स भी गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम. ताले मु कहिबा कथा लिनक्स टा को प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन ए ओपन सोर्स, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी विंडोज, ऑप्शन डी मैक. लिनक्स टा एमानको भितरु को प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम. The right answer is not C. Windows गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम. सो लिनक्स टा मु पचारथिले को प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स टा होची गोटे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, next question for you. Which operating system can you give the smallest file name? एमानक भितरु को ऑपरेटिंग सिस्टम हमको अलाउ करे सबुठारु छोट आकार फाइल नाटा दबा पाई. Yes, you have give response as B, so that is the right answer. DOS रे ही ए जिनसटा हेतै फाइल नाटा सबुठारु छोट दिया जाई पारे, बट आउ सब ऑपरेटिंग सिस्टम रे अधिक अधिक बड़ नाम भी दिया जाई परिबो. Next question for you. Which of the following is not a multitasking operating system? Just जाइतला भी एटा. You should choose the sleep option when तमे sleep option जो विंडोज रा में बहुत सारा ऑप्शन थाए, रिस्टार्ट ऑप्शन थाए, स्लीप ऑप्शन थाए नहीं कि तो शटडाउन ऑप्शन थाए, एमती बहुत सारा ऑप्शन थाए. मु कहिबा कथा you should choose sleep option when केतेबेले तमे sleep option को चूज करिवो. Option A, the computer is tired after working for a whole day. You are leaving for a very short time and want to resume your work shortly. When your computer gets hanged frequently, let it sleep for some time.
You finish working and going to bed. आ भीतर को ऑप्शन टा ठीक हम तमे स्लीप ऑप्शन टा केते बेले चूज करिवो you have give response as A. No, the right answer is option B. Why option B is the right answer? Option B is right answer because of you are leaving for a very short time and want to resume work shortly. तमे किछि समय पय बाहर को जाउछ किंतु तमे चाहुनो जे सिस्टम को बंद कर देबा बा तमर से जो टास्क ता को करूछ बा किछि काम करूछ सेटा को बंद कर देबा को सो से टेम्पररीली पीरियड पय जदी तमे किछि समय रिलैक्स होबा को चाहुछ सेथि पय कि हमें यूज करू स्लीप ऑप्शन को आउ कोन से स्टेटमेंट ना ट्रू होबो नाही कंप्यूटर तो मेसिन से काहे के क्लांति अनुभव करिवो तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर when the computer guest has frequently कंप्यूटर हैंग होबा से तो स्लीप रो किछि संपर्क नाही तो कंप्यूटर को हमें शट डाउन करबा को पड़िबो कंप्यूटर को हमें ऑल्ट कंट्रोल डिलीट मारी कि एंड टास्क करबा को पड़िबो जो प्रोग्राम ता कंप्यूटर को स्पेशली प्रॉब्लम दोछि ताको एंड टास्क करी सॉल्यूशन करबा को पड़िबो यू फिनिश वर्क एंड गोइंग टू बेड तमे सोया को जीवा सहित कंप्यूटर किछि संपर्क ही नाही तो किछि समय पाई कंप्यूटर रो काम को ड्रॉप करी हमें जदी चाहूतिबा पुनी से काम को बैक करबा एंड से काम को धरी रखिबा रिज्यूम माने धरी रखिबा तो सेथि पाई कि स्लीप ऑप्शन को यूज करिबा सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द डैश डिस्प्लेस द नेम ऑफ एवरी कंप्यूटर यूजर ऑन द कंप्यूटर द डैश डिस्प्लेस द नेम ऑफ एवरी कंप्यूटर यूजर ऑन द कंप्यूटर ऑप्शन ए विश लिस्ट स्क्रीन ऑप्शन बी कमांड स्क्रीन ऑप्शन सी वेलकम स्क्रीन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस एमानक भितरु कोउटा हमर कंप्यूटर रो किछि यूजर ना को डिस्प्ले करिया पई हेल्प करे बा को जगह रे हम यूजर नेम ता को जानि पारु एनीवन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वेलकम स्क्रीन जोटी हमर यूजर ना दियाई थाए यूजर ताको नॉर्मल मोड रे ओपन करिवो कि गेस्ट मोड रे ओपन करिवो एई जगह रे ही डिसाइड करे सो दैट स्क्रीन इज नोन एज वेलकम स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू the category of software most appropriate for controlling the design and the layout of a complex document like newsletters and brochures is the category of software जो category of software हमर होची ठीक बा अधिक भलो बा प्रयोज्य जोटा कहूछ हमें controlling the design and the layout of a complex document गोटे complex document तयारी करिया पय जेंति गोटे newsletter हम तयारी करूची brochures तयारी करूची ताले ऑप्शन ए होची वर्ड प्रोसेसिंग ऑप्शन बी होची कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग बा जोटा को कैट ऑप्शन सी होची वेब पेज ऑथरिंग एंड ऑप्शन डी होची डेस्कटॉप पब्लिशिंग बा जोटा को डीटीपी एमानक भितरु कोटा होची मोर एप्रोप्रिएट एनीवन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग बा डीटीपी डीटीपी द्वारा ही हमें न्यूज़लेटर्स हो हमें जो ब्राउचर्स गुडा कहू हमें एगुडा को सब इजीली डेवलपमेंट करि परिबा पेज मेकर फोटोशॉप सम एक्सटेंड भी यूज करू आ कोरल ड्रॉ भी यूज करू सो दीज आर द डीटीपी टूल्स सो डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज द राइट आंसर क्विज वन इज नॉट ए सिस्टम टूल एमान को भितर कोटा गोटे सिस्टम टूल नुह ऑप्शन ए बैकअप ऑप्शन बी डिस्क डिफ्रैगमेंट ऑप्शन सी वायरस स्कैनिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव एमान को भितर कोटा गोटे सिस्टम टूल नुह एनीवन एमान को भितर कोटा गोटे सिस्टम टूल नुह एनीवन एमान को भितर ऑप्शन सी टा ही गोटे सिस्टम टूल्स नुह कहीं कि ना आमे जो सिस्टम टूल्स कहले एक्सेसरीज अंडर रे मिलुची ता भीतर ये सब किछि थाए बैकअप थाए जोटा को हमें डिस्क क्लीन अप डिस्क बैकअप एगुडा थाए डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन भी थाए किंतु वायरस स्कैनिंग बोली किछि गोटे ऑप्शन न थाए सो दैट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द मेमोरी व्हिच allocates space for DOS and application is called जो मेमोरीटा किछि स्पेस एलोकेशन करि थाए 10 फाइल पाई एवं एप्लीकेशन पाई ताको कोन कहे जाय थाए ऑप्शन ए एक्सपेंडेड मेमोरी ऑप्शन बी
cache memory, option C virtual memory, and option D conventional memory. This is one type of primary memory, and what is the right answer? The memory which allocates space for DOS and application is called. Yes, option D is the right answer. Conventional memory. Conventional memory boli kuha jaye. Okay, next question for you. The operating system creates dash from the physical computer. The operating system creates dash from the physical computer. Option A, virtual space. Option B, virtual computer. Option C, virtual device, and none of these. Yes, the right answer is virtual computer. This is the right answer. The virtual computer is the right answer. Next question for you. Which mode loads a minimal set of drivers when starting Windows? Which mode loads a minimal set of drivers when starting Windows? Option A, safe mode. Option B, normal mode. Option C, BGA mode. And option D, network support mode. एमानक भितरु को मोडटा मिनिमल ड्राइवर सेटिंग पई हमको विंडोज सेटिंग समय हेल्प करे. ऑप्शन ए सेफ मोड, ऑप्शन बी नॉर्मल मोड, ऑप्शन सी बीजीए मोड, ऑप्शन डी नेटवर्क सपोर्ट मोड. क्वेश्चन नंबर 37, which is the right answer? The right answer is option A, safe mode. जेतबेले कंप्यूटर रो किछि एई टाइप रो प्रॉब्लम आसे सेतबेले हमको सेफ मोड माध्यम रे हैंडल करिबा पई कोहा जाई थाए. Which of the following are loaded in safe mode? एमानक भितरु कोटा सेफ मोड रे हेई पारे. ऑप्शन ए कीबोर्ड ड्राइवर, ऑप्शन बी माउस ड्राइवर, ऑप्शन सी बीजीए ड्राइवर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 38, which option is the right answer? The right answer is your all of the above. ए सबु जिंस सेटिंग करा जाय परिबो सेफ मोड रे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. बहुत इंटरेस्टिंग जिंसटा. ए डैश इज ए नेम्ड लोकेशन ऑन ए डिस्क where files are stored. A dash is a named location on a disk where files are stored. एमानक भितरु कोटा से नेम लोकेशन जोटी की फाइल गुडा का हम स्टोर करू. ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी pod, option C version, and option D none of the above. Question number 39, which is the right answer? Yes, the right answer is folder. Folder होची सही जिंस बा folder is a system of storing electronic files. Folder ता होची एभली गोटे मोड जहा कि हमरो इलेक्ट्रॉनिक फाइल गुडा को स्टोर करिया पई हमको अलाउ करे. Next question for you, which type of command requires that is not required. Okay, which of the following is system software? Question number 42, which of the following is system software? एमानक भितरु कोटा होची गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी यूटिलिटीज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Which of the following is system software? एमानक भितरु कोटा होची गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर. एनीवन? एमानक भितरु कोटा को गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोली कहै जाय. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. ए सबु होची गोटे गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर. काहे कि ना मु तुमको कहितली पूर्व भी बहुत थोड़ा डिस्कशन करिछि. सिस्टम सॉफ्टवेयर माने जोटा कंप्यूटर सिस्टम को बेसिकली बूटिंग करिबा, स्टार्टिंग करिबा एंड विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उडा चलिया पे प्लेटफॉर्म तयारी करिबा पई हमको हेल्प करे. ताले एई जो कहूछ तमे सिस्टम सॉफ्टवेयर तादे चारिटा जिंस आसे. कोन कोन? प्रथम कथा अछि तमरो गोटे आसे ओएस, गोटे आसे डिवाइस ड्राइवर, गोटे आसे लैंग्वेज प्रोसेसर, आ गोटे आसे तमरो कोन जोटा कहूछ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो जहाँ भी हो तो यूटिलिटी प्रोग्राम.
तो ये सब किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर गोटे गोटे पार्ट ओएस कंपाइलर तो जोटा हम कहले गोटे लैंग्वेज प्रोसेसर भीतर आसुची यूटिलिटीज ये सब गोटे गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए यूजर इंटरफेस that is easy to use in considered to be a user interface that is easy to use in considered to be गोटे यूजर इंटरफेस जहाँ की इजी हुए यूज करिबा पाई ताको कोन एक्चुअली कहा जाए यूजर हैप्पी यूजर सिंपल यूजर फ्रेंडली एंड नॉन ऑफ द अबव से जिंसटा को कोन बोली कहा जाए एनीवन The right answer is सेटा को एक्चुअली कहा जाए यूजर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यूजर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बोली कहा जाए बस से जो एप्लीकेशन देखो यूजर फ्रेंडली बोली कहा जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए डैश इज ए फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट प्लग इन्स इनटू ए यूएसबी पोर्ट ए डैश इज ए फ्लैश मेमोरी स्टोरेज एमान को भीतर कोटा फ्लैश मेमोरी स्टोरेज जहाँ की प्लग इन करी थाए यूएसबी पोर्ट को Option A USB snap drive, option B USB flash drive, option C USB memory maker drive, and option D none of the above. Question number 44. Which is the right answer? If DAS is a flash memory storage device that plugs into a USB port. Anyone? The right answer is ऑप्शन बी दैट इज द यूएसबी फ्लैश ड्राइव सेटा को यूएसबी फ्लैश ड्राइव बोली हमें कहितो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ट्रू डैश सॉरी द डैश इज ए ड्राइव कंटेनिंग द फाइल्स टू बी कॉपीड एमान को भीतर कोटा से ड्राइव जहा की फाइल गुडा को कॉपी करियारे बा कॉपी फाइल गुडा को कंटेन करि पारे सोर्स ड्राइव ऑप्शन होची डेस्टिनेशन ड्राइव ऑप्शन सी होची यूएसबी ड्राइव Option D which is none of the above. Question number 45. Which is the right answer? The dash is the drive containing the files to be copied. Option A source drive. Option D destination drive. Option C USB drive. And option D none of the above. जो जगह फाइल टा कॉपी हुए एक्चुअली सेटा को आमे सोर्स ड्राइव बोली कहि दो बा मूल ड्राइव बोली कहि दो सेटू ही फाइल टा कॉपी हुए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम समस्त में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ना सुनिचे से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ता को ऑपरेटिंग सिस्टम रो बेस रे तयारी हिची ऑप्शन ए विंडोज Option B Linux, option C Unix, and option C CMOS. Question number 48. Which is the right answer? You have give response as C. Yes, C is the right answer. This one is the right answer. Unix. Unix the platform रही तैयारी हिची. Okay. The DAS operating system was initially created in the early 1970s at AT and Peace Bell Labs. The DAS operating system, co-operating system, 1970 मसिया पाखापाखि जेतले सी ऑपरेटिंग सिस्टम रो डेवलप सॉरी सी प्रोग्रामिंग रो डेवलपमेंट हेतिला सेतबेले एमानक भितर को-ऑपरेटिंग सिस्टम ता सेही समय डेवलपमेंट हेतिला ऑप्शन होची लिनक्स ऑप्शन बी होची डॉस ऑप्शन सी होची यूनिक्स एंड ऑप्शन डी होची जीएनयू क्वेश्चन नंबर 49 which answer is the right answer The right answer is that is also Unix. Unix in development hitla. Okay. Next question for you. Which command is used to undelete a bunch of files with extension .doc that you have just deleted? एमान को भितर कोटा यूज करा जाए undelete a bunch of files. undelete करिया पई बा undo करिबा पई जोटा .doc एक्सटेंशन थाय जहा तमे जस्ट डिलीट करिथिबो Option A on delete, option B on delete slash all, option C on delete asterisk.doc, all of the above. Anyone?
एमानक भितर को एक्सटेंशन दा यूज करा जाए आस्ट्रिक टा होची बॉन्ड्स पई यूज करा जाए एंड क्वेश्चन मार्क होची स्पेशली कैरेक्टर पई यूज करा जाए सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस वन इज द राइट आंसर on delete asterisk dot doc okay next question for you in windows the start button is used to हमर विंडोज रे स्टार्ट बटन को कहीं व्यवहार करा जाए ऑप्शन ए रन एप्लीकेशंस ऑप्शन बी डिवाइस सेटिंग ऑप्शन सी टर्न ऑफ द सिस्टम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव स्टार्ट बटन को विंडोज रे कहीं व्यवहार करा जाए एनीवन यस द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव स्टार्ट बटन रे सब किछि करा जाए स्टार्टिंग भी करा जाए डिवाइस सेटिंग भी करा जाए डिफरेंट प्रोग्राम को रनिंग भी करा जाए तो स्टार्ट बटन स्टार्ट्स ऑलमोस्ट ऑल टास्क नॉट दी sorry not a that is d okay next question for you which of the following is an essential file of Microsoft DOS boot disk एमानक भितर कोठा होची से एसेंशियल फाइल जहा कि जो DOS रो बूट डिस्क बा हमर जो सिस्टम फाइल को बूटिंग करबा पई यूज करा जाय command.com start.com free.com bot.com question number 53 which is the right answer option a is the right answer command.com द्वारा ही हमर कोन हुए माइक्रोसॉफ्ट डॉस रो बूटिंग फाइल दा बा सिस्टम रो बूटिंग फाइल दा हिताय ओके क्वेश्चन नंबर 54 which one is true for unconditional disk formatting एमानक भितर कोटा होची ट्रू बा ठीक unconditional disk formatting पाई ऑप्शन ए destroys every byte of data on a disk by overwriting it with blank spaces option b don't check scan surface after format option c transfer system files after format all of the above which one is true for unconditional disk formatting disk formatting पाई एमानक भितरु कोटा होची ट्रू yes option a is the right answer destroys all the byte of data but all the data this overwriting with blank spaces पुनी सब डाटा कटि जीवो आमे पुनी आउथरे नुवा डाटा को इंस्टॉल करि परिबा so option a is the right answer destroy माने होची ध्वंस करिवा बा काटि पकेइबा next question for you once a text has been cut to the clipboard once a text has been cut to the clipboard you can dash that text into another document option a paste option b copy option c transfer option d none of the above question number 55 which is the right answer once a text has been cut to the clipboard गोटे थरा गोटे टेक्स्ट क्लिपबोर्ड रो कटि गले you can dash that text into another document ताको another document बा अन्य गोटे डॉक्यूमेंट रे तुम करि परिबो कोन करिवो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ताको पेस्ट करिवो आउ कोन करि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेडियो बटन रो काम कोन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडियो बटन option a to select multiple option option b to select a single option option c to select all option and option d all of the above radio button रा actually कामोटा कोन you have give response as option d that is wrong answer radio button तारो actually काम होची to select a single option गोटे सिंगल ऑप्शन को चूज करिया पई हमको अलाउ करे तमे बेले बेले देखिथिबो फॉर्म मान करे ए टाइप रो सब बटन्स गुडा का थाय केन थाय ए दिकी ए टाइप रो सब थिबो तो मते को ऑप्शन दा राइट आंसर तार धीरे एंदी क्लिक करबा को पड़ियो तमे जो एमसीक्यू बेस एग्जाम गुडा भी दउचो ए टाइप रो थिबो रेडियो बटन आ धीरे क्लिक करला को जोडे बिंदु भलिया पळाय आसीबो तो गोटे समय केवल गोटी ऑप्शन को ही चूज कर जाय परिबो आ किछि करा जाय परिबो नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड the banker's algorithm is used option a to rectify deadlock
to detect a deadlock, to prevent a deadlock, to solve the deadlock. Bankers algorithm कौन पाई व्यवहार करा जाए? Anyone can give the response? Bankers algorithm को हमें कहाँ यूज करूँ? To rectify deadlock, to detect a deadlock, to prevent deadlock, and to solve the deadlock. Question number 57. Yes, option C is the right answer. To prevent deadlock, deadlock को prevention करिवा पाई एटा यूज करा जाए. Okay, next question for you. The primary purpose of an operating system is to. The primary purpose of an operating system is. गोटे operating system रो primary purpose बा मुख्य उद्देश्यटा कौन? To make the most efficient use of the computer hardware. To allow people to use the computer, to keep systems, programs employed, to make computers easier to use. Question number 58. Which is the right answer? The primary purpose of an OS. गोटे OS रो मुख्य उद्देश्यटा कौन? Anyone can give the response? The right answer is option A. To make the computer or the most efficient use of computer hardware. Computer hardware गुड़ाक बा computer mechanisms को ठीक से चलेवा होची मुख्य उद्देश्य ऑपरेटिंग सिस्टम रो. तापर आउ जहा बाकी पर कथा कंप्यूटर जो आमे हार्डवेयर गुड़ाक जंती कीबोर्ड कहूचे, माउस कहूचे, मॉनिटर कहूचे, सिस्टम यूनिट कहूचे, एगुडा सब ठीक से न चलले काम केमती हबो? तो मुख्य उद्देश्य है ओएस रो लोडिंग करिबा. सेति पई ओएस को ऑपरेटिंग सिस्टम बोली भी कहा जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. The primary purpose of an operating system already completed. You have used print manager window. You can use print manager window. तमे print manager window को कहीं व्यवहार करिवो? To check the status of files in the print queue, to cancel the print job, to interrupt printing, and all of the above. तमे print manager window को कहीं व्यवहार करिवो? Question number 60. Why print manager is used? Print manager कहीं व्यवहार हुए? Print manager आमे देखि थाउ जतले प्रिंटिंग करि थाउ टास्क बार रो साइड को गोटे आसी थाए. प्रिंटिंग टास्क ता कोन होची देखिबा पई. प्रिंटिंग पेंडिंग हे गला कि प्रिंटिंग ता प्रोसेसिंग हे गला कोन हैला भी ताले ए प्रिंट मैनेजर को सब काम पई यूज करा जाय. ऑल ऑफ द अबव. आमे को कामटा पेंडिंग हे कि पडिची ताको भी देखि परिबा बा जोटा प्रिंटिंग पई देइथिले सेटा हेई पाला नाही. कैंसल जदि आमे मारी दैछे एक रो अधिक थरो ताले तो भड़भाड़ हे कि सब तक प्रिंट बाहरी जीवो. ताले सिटी कैंसल भी करा जाय परिबो प्रिंटिंग जॉब जोटा को मु प्रिंटिंग करिबा को चाहूनी. इंटरप्ट प्रिंटिंग को जदि पॉज कर देबा को चाहूची ताले पॉज मध्ये मार देबी जहां पर प्रिंटिंग अब हबो नाही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Which of the following operating system reads and reacts in actual time? Which of the following operating system reads and reacts in actual time? इमान को भितर को ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली सिस्टम को रीड करी रिएक्ट करी थाए बा रिस्पांस करी थाए ठीक समय रे? ऑप्शन ए क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम, ऑप्शन बी रियल टाइम सिस्टम, ऑप्शन सी टाइम शेयरिंग सिस्टम, and option D batch processing system. Question number 61. Which is the right answer? The right answer is real time system. ठीक समय रे ठीक जो response टा मिले that is the real time system. So option B is the right answer. Next question for you. All of the following are true regarding virtual memory except. आमे जो वर्चुअल मेमोरी विषय रे कहउतले से वर्चुअल मेमोरी विषय रे एमानक भितरु को स्टेटमेंट ता होची ट्रू बा ठीक. ऑप्शन ए एनी अमाउंट ऑफ रैम कैन बी एलोकेटेड टू वर्चुअल मेमोरी. टू सेटिंग फॉर द अमाउंट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव स्पेस टू एलोकेट वर्चुअल मेमोरी कैन मैन्युअली चेंज. ऑप्शन सी दिस टेम्पररी स्टोरेज इज कॉल्ड द स्वैप फाइल और पेज फाइल. Option D, virtual memory is the physical space of the hard drive, the hard disk drive. Which option is the right answer? All of the following are true. A समस्त जिंस true
रिगार्डिंग वर्चुअल मेमोरी पाई एक्सेप्ट व्यतीत कहा व्यतीत ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस इज एनी अमाउंट ऑफ RAM कैन बी allocated to virtual memory RAM रो मेमोरी को केमती हम allocate करिबा RAM तो ऑलरेडी गोटे प्राइमरी मेमोरी तो ऑलरेडी जहां मैन्युफैक्चरिंग हे जाई किंतु आउ सब जिंस गुड़ाक आम ठीक ठाक वर्चुअल मेमोरी करि परिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स एंड वन लाइक विंडोज दैट ताले मुख्य डिफरेंसटा बा सबुठार बड़ डिफरेंसटा कोन एसेंशियल डिफरेंसटा कोन लिनक्स आ विंडोज भितरे थिबा ऑप्शन ए विंडोज कैन रन विथ एन इंटेल प्रोसेसर whereas Linux cannot. Option B, Linux is proprietary whereas Windows is not. Option C, there are multiple versions of Linux but only one version of Windows. Any programmer can modify Linux code which is not permitted with Windows. एमानक भितरु सबुठारु बड़ डिफरेंस लिनक्स आ विंडोज ऑपरेटिंग भितरे थिबा कोन Option D is the right answer. Any programmer can modify Linux code which is not permitted with Windows. तो Linux रे थिबा कोड टाकू तमे मॉडिफाई करि परिबो किंतु विंडोज बा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सेमि तुमको परमिट देई नाही जे विंडोज कोड को तमे मॉडिफाई करि परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कारण एटा होची गोटे जोटा कहती ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बट विंडोज टा होची गोटे प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम केवल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पाखे तार रिजर्वेशन अछि से कोन विंडोज रो कोडिंग रे चेंज करिवो बा विंडोज पई ऑपरेटिंग सिस्टम पई लिखा जायतिबा कोडिंग रे चेंज करिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज ए पेज फॉल्ट occurs when a page fault occurs when option A the deadlock happens. Option B, the segmentation starts. The page is found in the memory. The page is not found in the memory. Question number 65. Option D is the right answer. That's one. The page is not found in the memory. Page fault माने से पेज टा मेमोरी रे मिलु नहीं पेज फॉल्ट हे गला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बा बायोस जोटा सुनिथिबो समस्त बायोस रिसाइड्स इन RAM CPU मेमोरी कैचे ए बायोस सेक्शन ता को जगह रे एक्चुअली हमको मिली थाए 67 बायोस ता एक्चुअली को जगह रे मिली थाए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर जो बेसिक इनपुट आउटपुट टैक्स कैरी हुए बायोस सिस्टम रे तो बायोस सेक्शन ता एक्चुअली को जगह रे RAM पाखरे ROM सहित CPU बा मेमोरी कैचे सहित द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एडा ROM फाइल थाए मु कहि छि ना ROM रो फाइल गुडा को रीड ROM रे लिखा जायतिबा प्रोग्राम ता कंप्यूटर जतले बूटिंग अप हुए बा कंप्यूटर जतले स्टार्टिंग अप हुए प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दिए जे हाउ टू कंप्यूटर बूटिंग अप हबा दरकार ताले बायोस तारी पाखा पाखी जिंस ऑब्वियसली ROM से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द पावर ऑन सेट टेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट ऑकर ड्यूरिंग द पावर ऑन सेट टेस्ट बा जोडा कोजा पोस्ट एनीवन Question number 68. Option A is the right answer. This one is the right answer. Okay, next question for you. The maximum size of a write file is limited to only. The maximum size of a write file is limited to only. Maximum size ta jo file ro ame writing kariba कोटा पई सेडा limited. Name of the file, extension of the file, the amount of memory in your computer, all of the above. या भितर को स्टेटमेंट ट्रू द मैक्सिमम साइज ऑफ राइट फाइल इज लिमिटेड टू फाइल तार साइज जो लिमिटेशन हमें कहू
एग्जैक्टली कहा को नहीं कि कोई था no extension of not file. This one is the right answer. The amount of memory in your computer कितने जगह रे सेटा रहिबो ताकू ही नहीं कंसीडर करा जाए. अच्छा, which of the following is drop down list? गोटे सिंपल वेरी वेरी इजी जिंस प्रत्येक दिन आम यूज करू कंप्यूटर रे. Which of the following is drop down list? एमानक भितर कोउटा drop down list बोली कहंती? List, combo box, text area, none. List box, combo box, text area, none. Actually कोउटा को drop down list बोली कहा जाए, but drop down list एमानक भितर को टर्म सहित involved. Anyone? You give as a D. No. This is involved to combo box. Combo box माने combine. Combine माने कौन? Text box and list box. दीटार समाहार है. तमे आइदर गोटे फॉन्ट साइज को तमे एडजस्टमेंट करबा को चाहूछ तमे फॉन्ट रो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट रे जतले देखुछ सेठी क्लिक कर दोछ से फॉन्ट साइज भीतर तमे देखुछ 8 रु 72 भीतर डिफरेंट साइज दिया छि मो मैनुअली भी टाइपिंग करि परिबी माने कर 10 अछि 11 अछि 12 अछि मते माने कर 11.5 करिवार अछि मो मैनुअली भी 11.5 भी सेठी टाइपिंग करि परुछि एंड से लिस्ट भीतर थिबा कोनोसी साइज को भी चूज करि परुछि सो ड्रॉप डाउन लिस्ट माने सेटा कॉम्बो बॉक्स बोली कह जिवो लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स रो मिसा मिसी. ओके, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग जिंसोटा रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन ऑप्शंस थिला रिसाइक्लेड इन डेस्कटॉप टास्क बार माय कंप्यूटर. एनीवन? रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन. क्वेश्चन नंबर 71, which is the right answer? Option A is the right answer. S. Recently deleted file गुड़ा को साधारणतः recycle bin भीतर ही रहे. Okay, next question for you. Which components appear in the initial Windows startup display? Which components appear in initial Windows startup display? Initial Windows startup display रे एमान को भीतर कोटा display हुई. Option A dialog boxes. Option B start menu. Option C taskbar, and all of the above. Question number 72, which is the right answer? Which component appears the initial Windows startup display? You give response as C, taskbar. Yes, this one is the right answer. C is the right answer, taskbar. Taskbar रे ही सबु काम गुडा का हमर डिस्प्ले हुए सबु जिंस थाए स्टार्ट बटन भी सेठी ही थाए. Next question for you. A small part of the taskbar that has icons of the background running applications is सेटा कोन बोली कहंती. Option A start button, option B quick launch, option C taskbar, option D system tray. सेटा को एक्चुअली कोन बोली कहंती. A small part of taskbar that has icons of a background running applications. Background running application रे जो जगह हमको इंफॉर्मेशन मिली थाए सेटा को एग्जैक्टली हमें कोन बोली कहिताउ. सेटा को एक्चुअली हमें सिस्टम ट्रे बोली कहू. काहे कि ना सिस्टम ट्रे टा होची बैकग्राउंड रे चालुथिबा बा सिस्टम रो पछबेगे चालुथिबा जिंस. स्टार्ट बटन तो हमें जानी छे कंप्यूटर रो समस्त काम गुडा को स्टार्ट करा जे. नेक्स्ट असला क्विक लॉन्च. क्विक लॉन्च माने हमें जेंति गोटे मन करो गूगल क्रोम छोट आइकन साकरे टास्क बार थिबो हमें खोजी खोजी न करिया अपेक्षा टास्क बार संगे संगे क्लिक कर लागो सेठी स्टार्ट दे जाउथबो. टास्क बार तो जानिले स्टार्ट बटन थारो डेट एंड टाइम इंडिकेटर पर्यंत पूरा स्ट्रेच थाए. ऑब्वियसली सेटा सिस्टम ट्रे हबो आ कोन. अच्छा, another question, an operating system version designed for use with media center PCs in Microsoft Windows XP ताको एक्चुअली कोन बोली कह जाय. ऑप्शन ए होची होम एडिशन, ऑप्शन बी होची मीडिया सेंटर एडिशन, ऑप्शन सी होची टैबलेट पीसी एडिशन एंड नॉन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 74, व्हिच इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज मीडिया सेंटर एडिशन. ताको मीडिया सेंटर एडिशन बोली कह जाय काहे कि ना एथरे मीडिया सेंटर बा मीडिया सेंटर कथा आसी माने ऑब्वियसली मीडिया सेंटर एडिशन
गोटे आमे एमती कॉमन जिंस भी आमे आइडिया भी जनरेट करिबा. Okay, the time is very short, and that is also completed. Another, there are very interesting topics which maybe we cover in the next classes on marks. Thank you all for joining this class. Okay, thank you.